Good morning, my dear students. Standard 3rd, subject English. Myself, Miss Alima Sheikh. So, students, as you know, we had completed the Pinocchio chapter 2-page explanation part, right, students? In the previous lecture, we had completed part 1 as well as part 2. It means that page number 77 and 78. Right, students? Today we will continue this story. So, students, I request to everyone to open your English Bal Bharati textbook in that page number 78. So here, students, the 5th paragraph, as you can see, the puppet master was very annoyed. He decided to throw Pinocchio into the fire. Pinocchio's puppet friends pleaded with the puppet master not to do that. Then, instead of Pinocchio, the puppet master chose another puppet for throwing into the fire. Now, students, this 5th paragraph indicates that he decided to throw Pinocchio into the fire. Now, why the puppet master has decided to throw the Pinocchio into the fire? Because the puppet master was very annoyed. Means the puppet master was very angry because when the puppet show was started, that time what happened? Yes, the other puppets called Pinocchio on the stage. So, students, as you know, the Pinocchio had went to the theatre to see the puppet show. That time what happened? Yes, all the other puppets called Pinocchio on the stage, and what they had done? They had just clapped, jumped, but they are not doing any show. For that reason the peoples were angry. They started to shout. By looking this all things, the puppet master was very annoyed. Annoyed means angry. जैसे कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, पपेट शो शुरू हो रहा था और उस समय पिनाकियो ने एंटर किया थिएटर के अंदर, और जैसे ही दूसरे पपेट्स लोग ने पिनाकियो को देखा तो वो लोग सरप्राइज्ड हो गए और वो लोग दूसरे को क्लैप करने लगे, राइट, जंप करने लगे. ये सब चीज़ देखकर पीपल्स जो वहाँ पर ऑलरेडी शो देखने आए थे वो लोग क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे, राइट. वो लोग को शो पसंद नहीं आ रहा था, वो लोग गुस्सा हो गए थे, वो लोग सब चिल्लाने लगे थे. ये हमने लास्ट वीक के इसमें पढ़ा था, राइट. लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने ये पढ़ा था. अभी आगे का पॉइंट क्या है? यहाँ पर जो पपेट मास्टर है, जो मास्टर थे, जो जितने वहाँ पर पपेट थे, उनके जो मास्टर थे वो बहुत एनॉयड हो गए थे. एनॉयड मीन्स वो बहुत गुस्सा हो गए थे. And he decided to throw Pinocchio into the fire. So, as the puppet master was angry, and he decided to throw the puppet into the fire. जैसे कि वो puppet master बहुत गुस्सा हो गए थे और उसने डिसाइड किया था कि वो पिनाकियो को कहाँ पर फेंक देगा? आग में, फायर में, राइट. Pinocchio's puppet friends pleaded with the puppet master not to do that. So here, students, pleaded means to request. So here other puppets requested to the master that not to throw Pinocchio into the fire. जैसे कि यहाँ पर जो पिनाकियो के दोस्त थे, जो दूसरे पपेट्स थे, वो लोग ने मास्टर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ उसे फायर में मत फेंको, पिनाकियो को फायर में मत फेंको. Then, instead of Pinocchio, the puppet master chose another puppet for throwing into the fire. So here, then after what happened? The puppet master said, okay, I am not going to throw the Pinocchio into the fire, but I am going to throw the another puppet into the fire. जैसे कि वो मास्टर ने कहा, ठीक है, मैं पिनाकियो को फायर में नहीं डालता हूँ, बट उसने इमीडिएटली दूसरे पपेट को उठाया और कहा कि मैं इसे आग में फेंक दूंगा. So students, I hope everyone understood the 5th paragraph, right? Now move to the last paragraph of page number 78. Pinocchio was really good at heart. He was sorry
for other puppet very gallantly. He told the puppet master that he was ready to burn in the fire himself and the puppet master should spare the other puppet's life. Now students, this last paragraph tells us that now Pinocchio was really good at heart. जैसे कि यहाँ पर Pinocchio दिल से तो बहुत ही अच्छा था. He was sorry for the other puppet. Now here Pinocchio was feeling very sorry for the other puppet. जैसे कि यहाँ पर Pinocchio बहुत ही अपसेट हो गया था दूसरे पपेट्स के लिए. Very gallantly. Students, gallantly means bravely. बहुत bravely से उसने कहा. Now what he has said? He told the puppet master that he was ready to burn into the fire himself. जैसे कि उसने पपेट मास्टर से कहा बहुत ब्रेवली. गैलेंटली मीन्स ब्रेवली, बहुत हिम्मत से उसने कहा कि पपेट मास्टर से उसने क्या कहा कि मैं खुद ही फायर में बर्न हो जाता हूँ. मीन्स मैं खुद ही फायर में जल जाता हूँ. एंड द पपेट मास्टर शुड स्पेयर द अदर पपेट्स लाइफ. और पपेट मास्टर से उसने कहा कि मैं खुद ही जल जाता हूँ आग में, पर मेरे जो बाकी पपेट्स है उन सब की लाइफ को आप छोड़ दोगे. मीन्स उन सब की जान नहीं लोगे, आप उन सबको छोड़ दोगे. सो स्टूडेंट्स, एज हियर इट इज़ रिटन, गैलेंटली मीन्स ब्रेवली एज आई टोल्ड यू. स्पेयर मीन्स टू लीव, मीन्स myself I am going to burn into the fire. Who is saying this? Yes, the Pinocchio is saying to the puppet master that myself I am going to burn into the fire, but you have to leave other puppets. जैसे कि यहाँ पे Pinocchio ने puppet master से कहा कि मैं खुद ही आग में जल जाता हूँ, पर आपको मेरे दूसरे puppets जो हैं, दूसरी कठपुतलियाँ जो हैं, उनको छोड़ना होगा. So students, we had completed the page number 78. I hope so everyone understood till here, right? Now move to the next page. So here page number 79, the very starting paragraph. The puppet master was not really a wicked master. He let both the puppets go. Not only that, he also gave Pinocchio 5 gold coins for his old father Geppetto when he heard his story. Now, did Pinocchio take these coins to Geppetto immediately? No, the silly little puppet that he was. He got into more and more mischief and trouble due to the coins. Now students, the starting 2 stanza tells us that the puppet master was not really a wicked master. So here students, the puppet master, yes, he is not a bad master. Wicked means bad. जो यहाँ पर जो मास्टर है, जो कठपुतली का मास्टर था, वो इतना भी बुरा नहीं था. विकेड मीन्स बुरा, वो इतना बुरा मास्टर नहीं था. विकेड मीन्स बैड, एज आई टोल्ड यू. ही लेट बोथ द पपेट्स को, जैसे कि उसने दोनों पपेट्स को छोड़ दिया था. एक पपेट था पिनाकियो और दूसरा था जो उनके फ्रेंड्स थे, उसी में से एक पपेट था, राइट. उसने दोनों पपेट्स को छोड़ दिया. नॉट ओनली डैट, he also gave Pinocchio 5 gold coins for the old father Geppetto when he heard his story. So here students, the puppet master had left both the puppets, right, as well as he had given 5 gold coin to the Pinocchio by hearing his father's story. जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पपेट मास्टर था उसने दोनों पपेट्स को छोड़ दिया और पिनाकियो को 5 गोल्ड कॉइन भी दिया. क्यों? उसके फादर के लिए, जेपेटो, जब उसने पिनाकियो की कहानी सुनी. नाउ डिड पिनाकियो टेक दिस कॉइन्स टू जेपेटो इमीडिएटली? क्या
पिनाकियो ने वो कॉइन जो गोल्ड कॉइन्स थे उसको तुरंत जपेटो के पास लेकर गया. इमीडिएटली मीन्स तुरंत. नो, द सिली लिटिल पपेट दैट ही वॉज. जैसे कि आप जानते हो पिनाकियो जो पपेट है वो बहुत मस्तीखोर था, राइट. तो क्या उसने तुरंत वो कॉइन लेकर गया? नहीं. ही गॉट इन टू मोर एंड मोर मिसचिफ एंड ट्रबल ड्यू टू द कॉइन्स. वो कॉइन्स की वजह से वो और मुसीबत में चलते ही गया, क्योंकि वो तुरंत उससे जपेटो के पास कॉइन लेकर गया था नहीं. राइट स्टूडेंट्स? नो, द सिली लिटिल पपेट that he was not gone immediately to Geppetto. Instead of going to Geppetto, what happened? He got into more and more mischief and trouble due to the coins. कॉइन की वजह से वो और मुसीबत में फंसते गया. So students, we had completed the starting two stanza. Now move to the next. A kind fairy saved Pinocchio from the robber who had caught Pinocchio for the coins. But when the fairy asked Pinocchio about the coins, he lied to her. But then a strange thing happened. The moment Pinocchio told a lie, his nose grew longer. With every lie, it grew longer and longer. Pinocchio was really frightened. He asked the fairy to forgive him and promise never to tell lies again. So now students, this stanza tells us that a fairy, a kind fairy, saved Pinocchio from the robbers who had caught Pinocchio for the coins. जैसे कि यहाँ पर ये फैरी आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स. कैन यू सी द फैरी? यस. दिस काइंड फैरी, काइंड मीन्स दयालु फैरी, सेव्ड पिनाकियो, उसने पिनाकियो को बचाया. किससे? फ्रॉम द रॉबर्स, चोरों से. हु हैड कॉट पिनाकियो फॉर हिज कॉइन, जो चोर थे उन्होंने पिनाकियो को पकड़ के रखा था. क्यों? कॉइन की वजह से. उसके पास कॉइन था ना, गोल्ड कॉइन, इसकी वजह से चोर ने पिनाकियो को पकड़ के रखा था. किसने सेव किया? काइंड फैरी ने. काइंड फैरी सेव पिनाकियो फ्रॉम द रॉबर्स. बट when the fairy asked Pinocchio about the coin, he lied her. पर जब भी फैरी ने पिनाकियो से पूछा कॉइन के पर जब भी फैरी ने पिनाकियो से पूछा कॉइन्स के बारे में, what the Pinocchio had done? Pinocchio had lied to her. पिनाकियो ने फैरी से झूठ कहा. But then a strange thing happened. जब पिनाकियो ने फैरी से झूठ कहा तब एक अचानक से कुछ हुआ. Now let's see what happened. The moment Pinocchio told a lie, his nose grew longer. So here students, when the Pinocchio is saying lie to the fairy, what happened? Yes, his nose grew longer. जैसे ही पिनाकियो ने फैरी से झूठ कहा कॉइन के बारे में, उसकी जो नाक थी वो लंबी होते गई. As you can see in this picture, right students? With every lie, it grew longer and longer. So whenever the Pinocchio is saying lie to the fairy, his nose grew longer and longer. जैसे ही पिनाकियो झूठ कह रहा था फैरी से, उसकी जो नोज़ है वो बड़े से बड़े ही होते गई, क्योंकि वो झूठ कह रहा था. Pinocchio was really frightened. So here the Pinocchio was really frightened. Means Pinocchio बहुत ही डरा हुआ था. Frightened means डरा हुआ था. Why? Because his nose grew longer and longer. वो क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसकी जो नोज़ है वो बढ़ते ही जा रही थी. He asked the fairy to forgive him and promised never to tell lie again. So here students, the Pinocchio tell to the fairy, the Pinocchio has said to the fairy that forgive me, मुझे माफ़ कर दो. किसने कहा? पिनाकियो ने फैरी से कहा. As the Pinocchio said to the fairy that please forgive me and promised never to tell lie again. As well as Pinocchio promised to the fairy that next time I am not going to say any lie.
और उसने प्रॉमिस किया फेरी से कि मैं झूठ नहीं कहूँगा. So students, everyone understood? Now move to the next. Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice of his friends and his father and the fairy easily. So at the end of a number of adventures, do you know where he found himself? At the bottom of the sea. And there he was swallowed by a big shark that was 1 mile long. Poor Pinocchio. Now, at last, he was truly sorry for all the foolish things that he had done. But once you get into a difficulty, it's not very easy to get out of it. Now, students, this stanza tells us that Pinocchio did not learn to tell the truth. जैसे कि पिनाकियो ने कभी सीखा ही नहीं सच बोलना और लिसन टू द गुड एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हिज फादर एंड द फेरी इजीली. और उसने कभी एक और चीज़ उसने सीखा ही नहीं, किसी से गुड एडवाइस लेना या कोई उसके बारे में या उसको कुछ अच्छी चीज़ें बताता तो वो कभी सुनता ही नहीं. और कौन बताता था उससे अच्छी चीज़ें? उसके फ्रेंड्स, उसके फादर जेपेटो या फिर फेरी. कुछ भी चीज़ उसे बताते थे, एडवाइस देते थे तो वो सुनता ही नहीं था. सो एट द एंड ऑफ नंबर ऑफ एडवेंचर, डू यू नो वेयर ही फाउंड हिमसेल्फ? जैसे कि यहाँ पर पिनाकियो बहुत मस्ती करता था, राइट? तो आपको पता है इतने सारे एडवेंचर के बाद आपको पता है वो कहाँ पर मिला? एट द बॉटम ऑफ द सी. समुंदर के अंदर एकदम गहराई में. बॉटम मीन्स एकदम गहराई में, अंदर उसने अपने आप को पाया. क्यों? क्योंकि वो इतना झूठ कहता था, राइट? नॉटी था, मिसचीफनेस करता था. एंड देयर ही वॉज swallowed by a big shark that was 1 mile long. So students, here, do you know where is Pinocchio? Yes, he is deep down into the bottom, right? And there is one shark, right? And Pinocchio was swallowed by a big shark that was 1 mile long. Students, everyone know the shark fish? Yes, a large fish that has sharp teeth and a triangular fin on its back. By looking to the picture, students, can you observe? Yes, it's a shark. So Pinocchio was swallowed by a big shark that was 1 mile long. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शार्क फिश ने पिनाकियो को निगल ली, उसने उसको खा लिया, निगल लिया, राइट? Poor Pinocchio now, at last. He was truly sorry for all the foolish things that he had done. यहाँ पर लास्ट में, now where the Pinocchio is? Yes, Pinocchio is inside in the shark's stomach. वो कहाँ पर है अभी? शार्क के पेट के अंदर. और उसे क्या फील हो रहा है अभी? He was truly sorry for all the foolish things that he had done. उसे बहुत सॉरी फील हो रहा है जितना भी उसने फुलिश चीज़ें की थी. But once you get into a difficulty, it is not very easy to get out of it. अगर एक बार हम मुसीबत के अंदर फंस जाएंगे तो आसानी से हम बाहर नहीं आ सकते. So here, as you can see, now where is Pinocchio? Pinocchio was inside the shark stomach, right students? So students, I hope everyone understood till the third paragraph. So students, can you see I had made some boxes, means it's a paragraph wise. Okay, now move to the last paragraph of page number 79. However, inside the stomach of the shark, Pinocchio saw a faint light. When he went near the light, surprise of surprises,
he found Geppetto. Geppetto had been worried about Pinocchio. Since he had left home, he had searched for Pinocchio far and wide during. Now students, till here I am going to explain you, then we will go to the next page. So here the last two stanza tells us that, however, inside the stomach of the shark, Pinocchio saw a faint light. So students, as I told you, now where is Pinocchio? Yes, Pinocchio is inside the shark stomach. Now, inside the shark stomach, what Pinocchio had saw? The Pinocchio had saw that a flint light. Students, flint light means not strong or clear light, but he had seen a light. When he went near the light, surprise of surprises. So here, when Pinocchio had seen the light, he went near to the light. What he has seen? He had seen surprise and more surprise. जैसे कि उसने शार्क के स्टमक के अंदर एक रोशनी देखी, छोटी सी रोशनी, और जब वो रोशनी के पास वो गया, जहाँ से रोशनी आ रही थी, उजाला आ रहा था, उसके पास वो गया तो वो सरप्राइज्ड हो गया. अब वो क्यों सरप्राइज्ड हुआ? He found Geppetto. उसने Geppetto को देखा. Geppetto कौन है? फादर है, राइट? Geppetto had been worried about Pinocchio since he had left home. So here Geppetto was very worried about the Pinocchio when Pinocchio had left the house. Students, worried means चिंतित. तो Geppetto बहुत ही चिंतित में हो गया था, मीन्स उसे बहुत चिंता हो रही थी Pinocchio की, right? Since he had left home. So when Pinocchio left home, for that reason the Geppetto was very worried. He had searched for Pinocchio far and wide. So Geppetto was searching for the Pinocchio far and far. जैसे कि यहाँ पर Geppetto Pinocchio को ढूंढने के लिए बाहर निकला और बहुत दूर दूर तक उसने Pinocchio को ढूंढा. दूर दूर तक, यहाँ वहाँ सब जगह उसने Pinocchio को ढूंढा. So students, we had completed the page number 79. Now move to the next page, page number 80. In that very first line, the shark had soiled the ship on which Geppetto was travelling. With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. He carried Geppetto back to the shore. Now students, the next paragraph. After that, Pinocchio, really proud to be a good boy, he began to work very hard to help Geppetto. When he heard that the fairy was ill, he sent her all the money that he was saving for himself. And then, to his joy and amazement, he found that he had turned into a real boy. Based on The Adventures of Pinocchio by Carlo. Now, when Geppetto was searching for Pinocchio, right? As you can see, students, Geppetto was sailing a boat, right? So, that time what happened? The shark had soiled the ship on which Geppetto was traveling. जैसे कि आप देख सकते हो, शार्क ने Geppetto को भी निगल लिया, राइट? जब Geppetto Pinocchio को ढूंढ रहा था, राइट? With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. So here, by the courage, right? Effort and courage, Pinocchio took Geppetto out of the shark's stomach. यहाँ पर Pinocchio ने बहुत कोशिश किया, एफर्ट किया और वो Geppetto के साथ दोनों जन शार्क के स्टमक से बाहर आ गए. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ Pinocchio courage and effort. With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach, as I told you. Now, he carried Geppetto back to the shore. जैसे कि Pinocchio ने
पिनाकियो ने जेपेटो को समुंदर के किनारे पर लेकर आ गया. आफ्टर डैट पिनाकियो रियली प्राउड टू बी अ गुड बॉय. जैसे कि फिर पिनाकियो को लगा कि मैं सच्ची में बहुत अच्छा लड़का हूँ, बिकॉज ही ओनली सेव हिज फादर्स लाइफ एज यू नो. ही बिगैन टू वर्क वेरी हार्ड टू हेल्प जेपेटो. उसके बाद पिनाकियो बहुत ही मेहनत करने लगा, अपनी फादर की हेल्प करने लगा. When he heard that a fairy was ill, he sent her all the money that he was saving for himself. Now, when Pinocchio heard that the fairy was not feeling well, what he has done? Yes, he had given all the money which he had saved for himself, he had given to the fairy because the fairy was ill, right? जैसे कि पिनाकियो को जब सुनने में आया कि फैरी बीमार है, तो पिनाकियो ने क्या किया? उसने उसके सारे पैसे जो उसने जमा किया था खुद के लिए, वो सारा पैसा उसने किसको दे दिया? फैरी को दे दिया. क्यों? क्योंकि फैरी बीमार थी. एंड देन टू दिस जॉय एंड अमेजमेंट ही फाउंड दैट ही हैड टर्न इनटू अ रियल बॉय. सो स्टूडेंट्स, ऑन द नेक्स्ट डे the Pinocchio was surprised to see that he was turned into a real boy. Amazement means a feeling of great surprise. जैसे कि यहाँ पर पिनाकियो बहुत ही खुश हो गया दूसरे दिन, क्योंकि वो चेंज हो चुका था और वो एक रियल बॉय बन गया था. उसकी सारी अच्छाई जो उसने किया था, फादर्स को हेल्प करना, फैरी जब बीमार थी उसको पैसे दिए थे, राइट, ये सब चीज़ देखकर जेपेटो नेक्स्ट दिन क्या बन गया? एक रियल बॉय बन गया उसके फादर का. सो स्टूडेंट्स, आई होप everyone understood this lesson, right students? Students, after watching this video, I am going to send you the notes. So students, you have to complete the notes before 5 p.m. Students, if you have any doubt regarding the notes or about the story explanation, you can call me or WhatsApp me on my personal number. So students, thank you for watching.